Assalamu alaikum. Let's see some example related to the boundary layer. This is an example from the book. It states that air flowing into a 2 feet square duct with a uniform velocity of 10 feet per second forms a boundary layer on the wall as shown in the figure. The fluid within the core region outside the boundary layer as it flows as it were inviscid. तो which we have a square duct जिसका 2 feet इसकी height है और into the paper 2 feet उसकी depth है और जो velocity है upstream velocity that is 10 feet per second. बाउंड्री लेयर क्रिएट हो रही है ऑन द बोथ वॉल्स और उसके दरमियान में आउटसाइड द बाउंड्री लेयर द फ्लूइड इज ऑलमोस्ट इनविसिड because there is no velocity gradient. From the advanced calculations, it is determined that for this flow, the boundary layer displacement thickness is given by. From some calculation or some analysis, what happened? We have this relation which is delta star. This is boundary layer displacement thickness as a function of x, which means that as you move into a direction of the flow, this boundary layer thickness will vary or it will increase as you move in a direction of the flow. Boundary layer thickness basically क्या वही होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि it actually the length if you increase or decrease it can actually you can simulate this a real flow into a inviscid flow. What is required? Determine the velocity u as a function of x of the air within the duct but outside the boundary layer. तो हमें u की वैल्यू निकालनी है as a function of x but outside the boundary layer. तो सबसे पहले रीजन assumption is हमने जो फ्लो रेट है वो दोनों का बराबर है तो u1 times a1 which is 10 feet per second is equals to 10 into 2 square because 2 is a square. This is the shape of the duct is square. So 2 square is basically the front the corresponding area that comes out to be 40 feet per second 40 cube per second. So this 40 cube per second 40 cube per second would be equals to the coordinate equals to integral UDA which is u times 2 feet into the core, right? तो अगर आपके पास ये दो है और ऊपर भी बाउंड्री लाइन थिकनेस कुछ 2 डेल्टा स्टार है और नीचे भी डेल्टा स्टार है तो यू विल द टोटल लेंथ ऑफ दिस inner core will be 2 feet minus 2 delta star raised to power 2. So this is the relation of the flow rate अगर जो यहाँ पे हो रहा है अगर आपने u निकालनी है in terms of x, right? तो 40 आपके पास फ्लो रेट आ गया और ये जो फ्लो रेट है वो बेसिकली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा स्टार की वैल्यू आपने यहाँ से उठाई which is equation number 1 and you replace it. So you have this relation which is u equals to 10 upon 1 minus 0.007 x exponential half that's to the power complete square. So this is the equation. This is an answer of the question. But the important thing is not this answer, but the physical interpretation. So which actually u means the velocity within the core region in visit core, right? So you can see that the u is also a function of x. It's not a constant value. So as you move in the direction of the flow, what happens that delta star increases and or the boundary layer thickness increases and what happens that the core shrunk. So as the core shrunk the velocity as you x बढ़ रहा है तो core shrunk हो रही है और u जो है वो बढ़ रही है because आपने flow rate को constant रखना है. So just we can see from note that the u increases in the downstream. For example, जब आपके पास u 0 थी तो वो 10 थी and as you move in direction of the flow जब वो 10 feet हो गई 100 feet हुई तो जो velocity है वो 10 से 11.6 हो गई and the viscous effects that cause the fluid to stick to the wall reduce the effective size of the duct, right? ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो duct का effective size है within the core region है वो छोटा हो रहा है which means you need to in order to conserve the mass principle वेलोसिटी जो है इसको बढ़ना चाहिए ताकि वो फ्लो रेट को जो है मेंटेन रख सके. सो जो प्रेशर ड्रॉप चाहिए बिकॉज जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप हम वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा तो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर ड्रॉप वी कैन अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बट ओनली in this region. We cannot apply Bernoulli equation in this region because this is the viscous region, whereas we can apply the Bernoulli equation in this inviscid core. तो जब हम Bernoulli apply कर सकते हैं तो P1 plus the half rho u square plus P1 plus half rho u square. तो जब रो डेंसिटी अब जो भी है P1 जो है वो उसका 0 है because it's coming from outside. तो P2 जो है that is because we know the U1 which is 10 feet and we know the U2 which is the velocity as a function of x into the direction of the flow. तो जब उसमें replace करते you have P equals to this term. So you can see that the pressure is you have a pressure term which should be
which should decrease in direction of the flow. And as you can see that at x equals to 10 feet and the pressure is negative, and which means that it if it is आपके पास pressure जो है वो कम होगा जब भी velocity बढ़ेगी. So अगर आपको velocity को maintain रखना है तो what we need to do, we need to increase, we need to actually increase the height of the duct equals to delta star, ताकि जो velocity है वो कम ना हो बल्कि velocity मेंटेन रह सके. तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाता रहूँगा so I will be having different values of delta x, and in the same proportion I need to actually widen the duct in order to achieve the same velocity. So this is a basic numerical about the boundary layer thickness and boundary layer displacement thickness. Moving forward, let's see another numerical. This is pretty simple. So this is another interesting numerical to see. This is example number 9.5. A fluid flows steadily past a flat plate with a velocity of 10 feet per second. At approximately what location will the boundary layer become turbulent, and how thick is the boundary layer at that point? So this is the boundary layer thickness value. Delta is equals to 5 upon 5 under root nu x upon u. This comes from the Brazier's Prandtl solution. So we know that the x critical equals to uh, nu re x critical upon u, right? तो ये रिलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने एक्स क्रिटिकल यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको हम इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल रखा अपने 5 एक्सपोनेंशियल 5. न्यू जो है उसको हमने छोड़ दिया एज एस, और यू जो है वो 10 फीट रखी. तो यू हैव गॉट एक्स क्रिटिकल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू, राइट. सो सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे x को यहाँ रिप्लेस कर दें तो यू विल बी हैविंग डेल्टा, which means कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, बिकॉज एक्स क्रिटिकल इज द लेंथ जिस पर फ्लो जो है वो लेमिनार से ट्रबलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यू कैन सी दैट एक्स क्रिटिकल की वैल्यू आपने यहाँ पर कैसे रखी, बिकॉज आपने एक्स की वैल्यू 5 एक्सपोनेंशियल 4 into न्यू रखा यहाँ पे इसका, तो यू हैव a new value of delta critical 354 new. Now come to this table. We have three different fluids: water, standard air, and glycerine. Water's nu is 1.1 exponential minus 5, air is 1.57 minus 4, and glycerine in 1.24 exponential minus 2. So you can see that the water is the least viscous fluid, air is the a bit viscous than water, and glycerine is the most viscous. So if you replace these new values here, you will having x critical at different values, and similarly correspondingly you will be having delta critical at x equals to 0.6 at for these different values of nu. So this table is a very interesting insight, give you interesting insight. You can see that जो वाटर है आपके पास उसका सबसे कम उसकी विस्कोसिटी है, तो विच मीन्स कि उसकी जो उसमें जो इनर्शियल वैल्यूज़ हैं या उसमें जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रही है. एक्स क्रिटिकल बहुत छोटी है, मतलब कि जो प्लेट है उसके ऊपर 0.6 पर ही एट 10 फीट पर सेकेंड वो जो है फ्लो जो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट हो गया, और वहाँ पे जो है एक्स क्रिटिकल की वैल्यू भी बहुत छोटी आ रही है 0.004. एयर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा विस्कस है वाटर से, तो वहाँ पे जो एक्स क्रिटिकल की वैल्यू है जहाँ पे लेमिनार से ट्रांजिशन टर्बुलेंट हो रहा है वो 7.85 फीट पे है. और ग्लिसरीन में जो है वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, बिकॉज ग्लिसरीन जो है बहुत विस्कस है. तो जितना विस्कस होगा उतनी लंबी उतना बड़ा जो है उतनी बड़ी वैल्यू आएगी एक्स क्रिटिकल की, और जितना ज़्यादा जो है फ्लो जो है वो इनविसिड या फ्लो जो है विस्कोसिटी उसकी कम होगी उतनी जो है वो जल्दी वो ट्रांजिट करेगा फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट. Or you can also see that the x critical value is quite high. In case of glycerine, the boundary layer thickness is 4.5 feet, which is very high. It's almost it's like that's significantly high compared to the water and air. And water in the case of water is actually very low, like one feet could be like 1 2 3 yeah, 1,000 times come come for a feet, right? So this is a very interesting observation. Laminar flow can be maintained on a longer portion of the blade if the viscosity is increased. That's actually when we discussed, because glycerine has a higher viscosity. However, the boundary layer become eventually turbulent होगी. बस इंटरेस्टिंग बात है कि 640 फीट के बाद ग्लिसरीन की बाउंड्री लेयर जो है वो turbulent में कन्वर्ट हो रही है. बट द थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसी प्लेट है जो प्लेट की लेंथ ही 10 फीट है, अगर उस पर ये ग्लिसरीन का ये वाला फ्लो हो रहा है जो कि 10 फीट से हो रहा है, तो आपके पास बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट नहीं होगी.
बिकॉज आपके पास सफिशिएंट लेंथ ही नहीं है क्लिसरीन को फ्लो के कन्वर्ट करने की फ्रॉम लेमिनार टू turbulent. So this is really important. You need to find x critical from these relations from Reynolds number, and then you can simply replace here to get the delta critical, the boundary layer thickness at the point where the flow is transiting from laminar to turbulent. So this is it from these numericals are rather theoretical, and so इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिटेल में ड्रैग और लिफ्ट के दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, because after this topic we'll be discussing drag and lift from a application point of view, and we will be covering numericals in that part of the chapter. So this topic actually gives you a very brief introduction about the boundary layer and some of the concept of boundary layer and the mathematics involved it, and a very basic really basic solution of Prandtl and Blasius for a simple case of a flat plate. So thank you for listening, and I hope you get some idea about this topic. If you have any questions, please let me know in the live session. uh, Thank you.